for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend
the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. Item number 1, Item number 2, Srimati Nirmala Sitaraman ji. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ 10% ਜੋ है वो टैक्स लगेगा। 9 तो लेके 12 लाख की इनकम ते 15% तक का टैक्स लगेगा ते 12 तो लेके 15 लाख की इनकम ते 20% टैक्स लगेगा। सो मिडल क्लास में इत्थे वड्डी राहत इत्थे दित्ती गई है। 12 तो लेके 15 लाख जिन्हां दी इनकम है उन्हां ते 20% टैक्स लगेगा ते जिन्हां दी इनकम 15 लाख तो वध है ते 30% तक का टैक्स लगेगा। पर जो एक वड्डी राहत 5 लाख नूं बदल के हुण जो है 7 लाख किया गया। 7 लाख की आमदन तक हुण कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख तक की जे तुहाडी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तो इलावा टैक्स स्लैब विच बदलाव वेखण नूं मिले। 3 लाख तक की जे इनकम है तो कोई टैक्स नहीं। 3 तो लैके 6 तक जो है 5% तक का टैक्स लगेगा। 6 तो लैके 9 लाख जेकर आमदन है तो 10% तक टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स विच राहत मिली है। स्लैब विच इत्थे बदलाव वेखण नूं मिलिया। 7 लाख तक की इनकम ते हुण कोई टैक्स नहीं लगेगा। 15 लाख तो वध दी जिन्हां दी इनकम है 30% तक टैक्स लगेगा। पर जो वड्डा ऐलान अज दा है 7 लाख रुपए जो पहला 5 लाख तक का हुंदा सी उस नूं चेंज करके 7 लाख किया गया है। ते होर भी कई वड्डे ऐलान किए गए हैं। किसानां लई वड्डे ऐलान किए गए हैं, महिलावां दे लई वड्डे ऐलान किए गए हैं। ते की चीज़ां सस्तियां होणगियां उसका भी वेरवा दे दिंदे आ क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो घटी है। खिडौणियां ते साइकिल ते ऑटोमोबाइल सस्ते होणगे ते इस तो इलावा कई एसिड्स कैमिकल्स ते कस्टम ड्यूटी घटी है ते भी सस्ते होणगे। कुछ मोबाइल फोन सस्ते होणगे, कैमरे दे लेंस भी सस्ते होणगे, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते होणगे ते विदेशी इलैक्ट्रिक चिमनी जो है वो महंगी होगी। कस्टम ड्यूटी वधाई गई है। विदेशों तो जो चांदी का समान आएगा वो भी महंगा होएगा, उस पर भी कस्टम ड्यूटी वधाई गई है। सिगरेट भी महंगी होएगी। इन्हां सारियां ते कस्टम ड्यूटी वधाई गई है। इनडायरैक्ट टैक्सिस ने ते उत्थे डायरैक्ट टैक्सिस की जेकर इत्थे गल कीती जावे 7 लाख तक की इनकम ते हुण जो है इत्थे राहत दित्ती गई है। इत्थे ਇਹ दस दईए टैक्स स्लैब विच वड्डा बदलाव किया गया है। जो पहला 0 तो लैके 2.5 होंदा सी यानी कि 2.5 लाख तक का होंदा सी वो हुण 3 लाख दा ते कोई टैक्स इसे कोई परसेंट नहीं टैक्स लगेगा। ते 3 तो लैके 6 लाख तक की इनकम ते 5% टैक्स लगेगा। पहला जो लगता सी पहला 0.2.5 होंदा सी ते हुण जो है 0 टू लैके 3 हो गया। साडे नाल साडे सहयोगी मनिंदर जुड़ गए ने। मनिंदर इस समय जो है वड्डी राहत दी गई है। 7 लाख तक की जिन्हां दी इनकम है उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगेगा। उत्थे किसानां लई भी वड्डे ऐलान अज बजट दौरान किए गए ने जी।